Hello friends, welcome back to channel Math Forum. Today we are going to see the example number 3 on the equilibrium method. Fine. Now in this example, first we will understand what is the question and what we have to find out. Now in this question we have to find out the natural frequency of a given system. This is a given system and we have to find out the natural frequency of this given system. Now what is actually there in this system? Focus only on this part. First we are having a mass m, that is small m. We have a pulley having a capital mass M, and we are having a spring having a stiffness K. Now we have to find out the equation of motion or the natural frequency of this system. Now how to proceed? Now first identify this mass will do a linear vibration. Suppose if I apply a displacement x in this direction, this mass will travel in the linear direction and this pulley will rotate in an angular direction at an angle of theta. Clear? And this pulley is having a radius small r. Now this is having x as a coordinates, this is having theta as a coordinates. So we have to analyze these two things in a differently. So first we will consider the mass. Now if we apply a displacement x in this direction, inertia force will be in the opposite direction of displacement as we have studied. So for the mass, inertia force will be what? Mx double dot in the upward direction. This is a string, so it will have a tension which will be balanced. Now this much is the free body diagram of the mass. We have the displacement x, because of which mass will be displaced by distance x in the downward direction, and because of the displacement there is an inertia force mx double dot opposite to direction, and we are having a tension. So we apply equilibrium method. So we apply the D'Alembert's principle. What is the D'Alembert's principle? Submission of inertia force plus submission of the external force equals to 0. Now what is the inertia force in this condition? Mx double dot. So we will write mx double dot is the inertia force and the external force is only the tension. So plus T equals to 0. So we will get T equals to minus mx double dot. Clear? This is the case of the mass. Now suppose mass is done, so we will remove the mass. Now we have only left with the tension. Now mass is pulling in this direction, downward direction, so the pulley will rotate in the clockwise direction by an angle of theta. So the pulley is rotating clockwise by an angle of theta, so the inertia torque will be in the anti-clockwise direction. The inertia torque will be in the anti-clockwise direction, I theta double dot. Clear? Now let us take an example of a spring. Suppose this is the imaginary line. When the mass is displaced x distance, here it is a mass, and the mass is displaced x distance, this will move and this spring will get stretched. जैसे आपका मास आप नीचे पुल करोगे, ये रोटेट होगा तो आपका स्प्रिंग भी क्या होगा? स्ट्रेच्ड. तो ये पॉइंट आपका यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा बिकॉज ऑफ दिस स्ट्रेचिंग ऑफ दिस स्प्रिंग. नाउ दिस इज व्हाट? R. It is rotated by an angle of theta. Clear? So ये R था, तो ये आपको क्या बन जाएगा? R cos theta. So जो theta is very small and this will become R sin theta. And this is nothing but जितना ये नीचे खसकेगा x distance, उतना ये x यहाँ पे मिलेगा. So you will get x equals to R sin theta. Since theta is very small, x equals to R theta. Clear? जैसे हमने previous numerical में देखा था. Now coming to the D'Alembert's principle. This is performing what? Not the linear or angular vibration. So inertia moment. What is inertia moment?
टुवर्ड्स द मीन पोजीशन, क्योंकि आपने डिस्प्लेस ऐसा किया है तो फिर मीन पोजीशन फिर ऐसा होगा. सो इनिशियल मोमेंट विल बी आई थीटा डबल डॉट प्लस एक्सटर्नल मोमेंट क्या है इसमें आपका, दो फोर्सेस है हमारे पास. एक तो ये स्प्रिंग फोर्स है, जब ये रोटेट होगा तो स्प्रिंग स्ट्रेच होगा, तो स्प्रिंग स्ट्रेच होगा तो स्प्रिंग इसको नीचे पुल करेगा, मीन्स आपका स्प्रिंग फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा. स्प्रिंग फोर्स क्या होता है के एक्स. सो स्प्रिंग फोर्स हो गया के एक्स. आपको मोमेंट चाहिए इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या आपका, क्योंकि ये पुली इसके अबाउट रोटेट हो रही है, स्मॉल आर के एक्स इंटू आर. एंड टेंशन वो आपका टेंशन इंटू आर. वाई माइनस, बिकॉज दिस इज गोइंग इन दिस डायरेक्शन, ये आपका ऐसे ट्रैवल करेगा, नॉट टुवर्ड्स द मेन पोजीशन, इज गोइंग, दिस टी इज गोइंग अवे फ्रॉम द मेन पोजीशन. क्लियर. सो इट विल बी नेगेटिव एंड इक्वल्स टू 0. x इक्वल्स टू हमने क्या निकाला आर थीटा, आपको मिलेगा आई थीटा डबल डॉट x इक्वल्स टू के आर स्क्वायर थीटा माइनस के t की जगह पे क्या पुट कर सकते हैं अपन एम एच डबल डॉट. सो इट विल बी प्लस एम एक्स डबल डॉट इंटू आर इक्वल्स टू 0. जैसे हमने x इक्वल्स टू आर थीटा निकाला तो x डॉट होता है आपका आर थीटा डॉट एंड x डबल डॉट होता है आपका आर थीटा डबल डॉट. तो हम रिप्लेस कर देंगे, हो जाएगा आर स्क्वायर थीटा डबल डॉट इक्वल्स टू 0. थीटा डबल डॉट की टर्म टेक इट वन साइड, इट विल बिकम आई प्लस एम आर स्क्वायर थीटा डबल डॉट प्लस के आर स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 0. यहाँ तक समझ में आ गया आपको. नाउ आगे चलते हैं. सो इस टर्म को हम नीचे ले लेते हैं. सो विल गेट थीटा डबल डॉट प्लस के आर स्क्वायर अपॉन आई प्लस एम आर स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 0. अब ये इक्वेशन किसके से हो गया आपका, इसके जैसे हो गया, थीटा डबल डॉट प्लस ओमेगा एन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 0, इसके जैसे हो गया. सो थीटा ओमेगा एन विल बी ओवर by comparison k r square, it's inertia, mass moment of inertia किसका, पुल्ली का, plus mr square, it is radian per second. Now you can substitute the value of ip of the pulley, as you know you will get the final value of the omega n in radian per second, and you can find out the value of fn as omega n upon 2 pi in hertz. Now in the next lecture we will solve the same numerical by energy method. Total energy equals to constant. In this we have solved by the equilibrium method, D'Alembert's principle. So if you like this video, do like the channel, subscribe the channel and share with your friends. Till then, take care.